See, when we are doing this sorting thing, we will be using few DS, some थोड़ा सा algorithm का भी part आ जाएगा, where we will be discussing complexities कि भाई ये जो हमने sorting का algorithm बना दिया है, how much time will it take to execute, how much space will it take, right? तो हम complexities बोलते हैं. Complexities को two parts में measure किया जाता है. The first one is your time, the second is your storage, कितना कितना memory लगेगा. ओके, तो डोंट वरी, बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स मैं यूज नहीं करूंगा. आई विल बी कीपिंग इट सिंपल ताकि हम सब इसको बेनिफिट ले सकें. एंड लेट मी ब्रिंग फ्यू document to show you. Like I have implemented like all those, not all those, most of the sorting algorithm I have implemented in your C programming language, right? So let me open that drive. And yeah, okay, meanwhile it's opening, um any sorting algorithm, you know. Okay, first let me ask you, why we do sorting करते ही क्यों है? Why we do sort, why we do sorting? Easier to access data. Okay, easier to access data. Okay, yeah, makes sense. Anything else, anything, anyone? Why we do sorting? Same, easier access to data, minimum, maximum, all those sort of operations you can do in no time. Yeah. So again, time wala factor aa gaya, because these are two cost you pay. The first one is time, and second one is the memory. Let me open chat in my mobile, so that I'm opening on a few things on laptop. Maybe I open my phone too. One second. Okay, so that's absolutely correct. We do sorting to, you know, organize our data and to access it. That's completely valid point. Great. Who answered it first? Ahalya. No, no. Who did it? Akash. Great job. And yeah, Ahalya का भी same answer था कि we do sorting to, you know, access easily. One second. Just open हो गया. Okay, awesome. Now I will not miss any of your chat. I'm placing it here. Okay, so we have a lot of sortings. बहुत सारी तरीके के हमारे पास sortings हैं, but I will start with the simpler one. जैसे बहुत ही normal, और see, the maximum time जो sort में लग सकता है, that is your n square, right? N square is a complexity. I don't know if you know the um, कॉम्प्लेक्सिटी वाली जो क्लासेस होती हैं. वी हैव एन लॉग एन, एन स्क्वायर, बहुत सारी क्लासेस हैं यहाँ पे. अगेन आई विल नॉट कंफ्यूज यू विद ऑल दोज jargons, डोंट वरी. Okay. Yeah, so I will be starting these series with the very simpler sorting algorithms, which is nothing but your let's say bubble sort. So bubble sort is very very famous. It's very very famous to sort your small set of data. Okay, it's not recommended to use bubble sort on a very large data. For the for the large data, we have some better sorting techniques.
Maybe we have better data structure. Even maybe you can use heap tree. I love heap tree because it has the hippify function. That's really really interesting. Anyone here knows about heap tree? No, कोई नहीं. Heap tree, come on, ये तो बहुत ही कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है. Yes, we have one yes here. Yash Raj knows about heap tree. That's awesome. So exactly, exactly. So if you start deleting elements from the heap, that's the heap sort. How awesome data structure is this? When you create the heap tree, depending on you are creating max heap or min heap, you are actually building your sorting algorithm. When you start deleting the heap tree elements, it will automatically sort your data set. Great. So the first sort जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ, that is your sequential. Let's skip sequential because बहुत ही simple सा sort algorithm है. अगर आपको sorting आती भी नहीं है, and if you just try to do sorting, आप बहुत easily sequential sort का logic लिख लोगे. So let me open the bubble sort. Let's get the link, and here it is. Okay, I'm not sharing the screen, right? But give me a second. Let me share the screen. Share a Chrome tab and bubble sort. Or let me take it to the next Chrome tab. Let me create a brand new Chrome tab and उसके अंदर मैं open करूँगा. Because we will be switching in two different tabs. Okay, one will be your ये वाला जहाँ पे algorithm लिखा हुआ है, and one will be for your whiteboard. Yes, today I will be using my tablet to discuss on the whiteboard. थोड़ा visualize करके देखेंगे. That will be fun. Let's say a window and this one. Awesome. So yeah, just quickly confirm you can see my screen. Yep, my screen is visible. Cool. All right. So I will be using these two tabs. Here I have the logic. In this tab I have the logic of your bubble sort, and in the next tab we will be drawing something. Okay, we will try to do some sort of um, dry run. Cool. So let's start with this awesome thing. So as you see, the implementation in C programming language, I always prefer to go with C programming language when you start learning data structures or algorithm. So data structures algorithm अगर अभी start ही कर रहे हो, तो पहले C language को सीख लो, and then data structures algorithm start करना, because when you are learning these things, you may want to implement them, right? और implement करने के लिए we need a programming language. C language को करने में ज़्यादा time भी नहीं लगेगा. If you put 30 or 45 days, it will be completed. So C language को करने में ज़्यादा time भी नहीं लगता और बहुत easily आ जाती है ये. And it's a very fun language, my one of the favorite language. Cool. So here I'm actually including the stdio, not going to the programming part. Let's jump to the main things. So this is the array with a maximum size of 5, and these are the elements. And we clearly see they are not sorted, right? So these elements are not sorted. So we have the array.
This is the array. What's happening? It's much easier in the Linux wala system as compared to your um, Mac. It's slow. Let me increase the speed. One second. Let me increase the speed of the pointer. Okay, it's at the fastest. Cool. That's why I love spending time on my Linux system instead of this one. So yeah, 13, 16, 2. We have 34, and finally we have -1. Okay, so ignore if I'm writing so bad. Generally ऐसा नहीं लिखता मैं. It's like it's a very nice. I have a very nice writing on tablets also. Just today. Next times I will be taking these series on my Linux system. Okay, so this is your array, and we can clearly see it's not sorted. All the numbers are in random occurrence. They are not in order. So what we did here, we write a very nice bubble sort algorithm. Bubble sort algorithms. This is how bubble sort algorithm works, and the time complexity is n square. Okay, but what I did here, I did this magical thing which will reduce or we can say it will help us to reduce n square से थोड़ा सा कम हो जाएगा. Okay, but in general it's n square. Still we will count it in a n square because जो भी कम होगा that will be constant amount of time, और constant is not that इतना ज़्यादा focus नहीं करते उस पे. Again it will become n square. Okay, so this is the max की value है हमारी 5, and this is the logic. Let me bring the logic to the Jamboard. Cool. So what we are doing here, we are iterating I starting from 0 till I is less than max. Max is 5. 5 is the number of elements, maximum number of elements we can have in our array. And then we are doing I plus plus. So it's a linear loop. Inside this linear loop, we have another linear loop, and that's why it is n square, where n is the number of elements in the array. Okay, so inside linear loop, we have another linear loop. Here we are using j, again starting from 0 going till max, minus I minus 1. ये mathematics क्यों करा, I will explain it जब हम इसको ड्राई रन कर रहे होंगे, बट अभी आप कंसिडर कर सकते हो कि वी आर रनिंग j से max तक ही, and then j plus plus. What we are checking, we are simply saying कि अगर बबल सॉर्ट देखो काम कैसे करता है. बबल सॉर्ट वर्क्स ऑन द नेक्स्ट वाला को कंपेयर करके. इफ यू कंपेयर कि भाई a ऑफ j बड़ा है a ऑफ j प्लस 1 से, राइट, विच इज नॉट इन ऑर्डर. ऑर्डर से मेरा मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, राइट. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सॉर्टिंग वी टॉक अबाउट असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपको डिसेंडिंग इंप्लीमेंट करना है तो जो आपने लॉजिक लिखा है जस्ट इसका साइन उल्टा कर दो. इफ यू वांट दिस टू बी अ डिसेंडिंग का लॉजिक, जस्ट चेंज दिस लाइन and make it a of j is less than a of j plus 1, तो डिसेंडिंग के लिए बन जाएगा. नॉट अ वेरी बिग थिंग टू डू, बट हम मान के चलते हैं वी आर वर्किंग विद असेंडिंग ऑर्डर. तो आई एम चेकिंग a of j. अगर a of j बड़ा है a of j plus 1 से, so a of j is starting from 0. Let me draw very nice table. Let's draw in green color. So what where are we? So this is the a. Let's say this is I. Again, I'm very good at writing at tablet, but I don't know what it's not working with the MacBook. So this is J.
This is I. Let's say this is J. I starting from 0. J starting from 0. Okay. Cool. Max is 5. Alright. So what I'm doing here, I'm checking A of J अगर बड़ा है A of J plus 1 से. So let's find out. J की वैल्यू 0 है. So we are checking this one. क्या 13 बड़ा है 16 से? Yes or no? Quick yes or no in the chat box. Yes. हाँ? 13 16 से बड़ा कब से हो गया? Messing with me. Nice. 13 is smaller than 16. Cool. So, okay. All right. No, I asked ki if A of J is greater than A of J plus 1. Right? So we are checking कि 13 बड़ा है 16 से. So answer is no. अगर आंसर नो है दैट मीन्स इट इज इन द राइट प्लेस. ओके 13 को 16 से पहले ही होना चाहिए. ओके सो 13 as compared to 16 is at the correct position. So we can go to the next one. Okay, so yeah, we are good, and let's go to the next one. Let's do j plus plus and j will become 1. थोड़ा सा बड़ा, let's say j की वैल्यू होगी 1. So now we will do the same sort of comparison. We will say 16 बड़ा है 2 से. Again, quick yes or no. That's interesting. Yeah, it's so interesting. Solving these algorithms. Okay, come on. 16 is greater than 2. A quick yes or no. Yes, 16 is greater. So, ये condition true हो गई. So, we will come inside and follow the next steps. There is another variable which is temp. So, it's a temporary variable. We are going to use this variable to, swap. So, if someone from Python background don't be like, hey, we can use that comma wala tarika. I know Python is cool, but I love C language. So what we are doing here, I'm saying temp is equals to a of j. Okay, so j here have 1, a of j will be 16. So what I'm doing here, I'm assigning 16 to the temp. Then again, a of j is equals to a of j plus 1. So 1 यहाँ पे, at this location I'm bringing this 2, and a of j plus 1 will be temp. So at this location I'm taking 16. So you see, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम उनको स्वैप कर देते हैं. या अगर अब आप देखो 2 को 16 के कंपैरिजन में, तो वो बिल्कुल ठीक जगह पे है. 16 से छोटा है, दैट मीन्स वो यहीं पे होना चाहिए 16 से पहले. यप. And after this, what I'm doing j plus plus. So j will become 2. Cool. So now let's check array of j. Same condition check करें array of j, which is 2 right now. So I'm saying a of 2 0 1 2. Again we have 16 here. 16 बड़ा है 34 से. So again, come on, yes or no. 16 बड़ा है 34 से. No, 16 बड़ा नहीं है. So that means 16 34 के comparison में ठीक जगह पे रखा हुआ है. So we can go ahead and say j plus plus. Now j will become 3. Okay, j चलना कहाँ तक है? Let me introduce you this maths here. We are saying max की value है 5 minus I
I की value is 0. So 5 minus 0, 0. Oh, 5 minus 0 is 5. What happens? 5 minus 0 is 5. And then we are saying minus 1. तो 4. तो आपको j तब तक आइट्रेट करना है जब तक कि वो 4 से स्मॉलर है. That means this is the last iteration for your j. So let's compare 0, 1, 2, 3, 34. We are comparing क्या 34 बड़ा है minus 1 से? So come on, yes or no? 34 is greater than minus 1. Yes. Great. So what we need to do, we need to swap. So वापस से ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है. You already know. Temp के अंदर आपने 34 डाला. Then you bring minus 1 here and then you bring 34 here. दोनों को swap कर दिया. Okay. So that's the swapping. So after first pass, let me rewrite this array again. I want to rewrite this array. So after the first pass का मतलब होता है when you complete the first iteration, the first outer iteration. Okay. अगर I वाला loop आपने एक बार complete कर लिया, that is your first pass. So यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 16, here minus 1 and यहाँ पे 34. So let's write those. So we have 2 here, we have 16, we have minus 1 and then 34. Cool guys, so that's your first pass. First pass के बाद आपका जो array है वो कुछ ऐसा दिखता है. How nice. Okay, and let me remove the j's की value and temp की value. Now one more thing to notice, I की value change हो जाएगी because we are about to do I plus plus. Your I will become 1. 0 से अब ये बन चुका है 1. Cool. I की value क्या है 1. Okay. So this time let's say कि कब तक रन करना है, max है 5. So 5 minus I, which is 1, minus 1, which means 5 minus 1, 4, 4 minus 1 is 3. So j तब तक रन होगा जब तक ये 3 से छोटा है, which means j चलेगा 0, 1 और 2 इन पे. 0, 1 and 2. Okay, so let's do it. J की value again starts with a 0 because we are starting again. J की value 0 है. J less than 3k. So we go inside and check A of J, which is this one, 13. तो जरा चेक करो क्या 13 बड़ा है J plus 1 से, which is 2. क्या 13 बड़ा है 2 से? Yes. So अगर ऐसा है, we need to swap. Okay, so come on, let's swap. यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 13. Awesome, we did the first swap. Great. तो अब हो जाएगा J plus plus. J is now 1. So check one more time. Is this 13 greater than J plus 1, which is 16? क्या 13 16 से बड़ा है? Hmm? Is 13 greater than 16? No. That means कि ये अपनी बिल्कुल सही जगह पर है. 16 से पहले ही आना चाहिए इसको. So okay, we are cool with it. We have no issue. So now let's go ahead and update the value of J. And don't worry, next classes, next series में I will be using my Linux machine for explaining this topic ताकि मेरी writing अच्छी आ सके whiteboard पे. I don't know.
मैक पे शायद अच्छे से कंपेटेबल नहीं है. So just ignore the writing for today only. Next वाले में it will be awesome. You will love it. Okay, so now j की value is 2, and let's compare a of j, which is 13. Okay, sorry, which is 16. 16 और -1 को कंपेयर करो. क्या 16 बड़ा है -1 से? Come on, in the chat box. Yes, 16 is greater than -1. So we will be swapping them. -1 will come here and 16 will come here. Okay, and hold on, अभी मैं थोड़ा सा आपको और एनालिटिक वाला पार्ट बताऊंगा, बट अभी थोड़ा आइट्रेट करते हैं and then I will be telling you that. Cool. So now the swapping done, and अब j बन जाएगा 3 और ये लूप हो जाएगा finish. Cool. So we have successfully done our second pass. Okay. So let's update the value. This is the 2. Here we will write 13. Here we will write -1, and here we will write 16. 2, 13, -1, 16, and 34. Okay, let me rewrite it. 16. 2 passes are done. Okay, so hold on. Original array कुछ ऐसा दिखता था, like this one. See, it was 13, 16, 2, 34, and -1. Now, notice one thing. But before that, can anyone tell me out of these numbers, which is the maximum? Which is the maximum number out of these? 34. So Akash answered the first. 34 now. Yeah, nice, nice. 34 is the maximum. 34 is the maximum number out of these. Now see, after very first pass, where is 34? After very first pass, where is 34? Last element, correct. Last element. 34 becomes the last element. Okay, cool. If I um if I consider out of these elements, मैंने 34 को लास्ट में रख दिया. अब we will start ignoring 34. भूल जाओ 34 था. Okay, so just ignore 34. Out of 13, 16, 2, and -1, tell me which is the last maximum element. 16. Very good. 16 is the largest element out of 13, 16, 2, and -1. After second pass, where is 16? Second last element, exactly. Cool. Did you notice any pattern? जो फर्स्ट पास में और सेकंड पास में रिपीट हुआ, क्या आपने कोई पैटर्न नोटिस करा? It's putting the highest element at the end, exactly. And this is how your bubble sort works. Okay, it will find the maximum element of your array, put at the last. फिर उसको इग्नोर करके बाकी सब में से फाइंड आउट करती है मैक्सिमम एलिमेंट को, और फिर उसको लास्ट में रख देगा. फिर वापस से सेम कार्यक्रम, find the maximum element from the remaining and put it in the last. That's how your bubble sort works. Okay, bubble sort का मतलब ये नहीं है कि दो bubbles आएंगे, they will burst and your array will be sorted. No, this is the main logic. Okay, and that's why I implemented this part, max minus I minus 1, because there is no no logic to check
सॉर्टेड एलिमेंट्स, क्योंकि 34 और 16 ये सॉर्टेड हैं और ये यहीं रहने वाले हैं। ओके, तो कोई फायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का टू वेरीफाई कि 16 और 34 सही रखे हुए कि नहीं रखे हुए। दैट्स व्हाई आई मेक दिस मैथमेटिक्स। अदरवाइज इन जनरल इफ यू जस्ट गूगल बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम, वो इस तरह होता है कि आई इज लेस देन मैक्स एंड जे इज ऑल्सो लेस देन मैक्स। ओके, बट आई एड दिस थिंग मैक्स माइनस आई माइनस वन। ओके, सो जस्ट टू सेव थोड़ा सा टाइम। बट जैसा मैंने कहा, व्हेन यू डू सम एनालिसिस, जब आप कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हो, सो दीज टू थिंग्स गॉट एलिमिनेटेड बिकॉज कांस्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई अगेन वी land up with the n square. Cool. So that's your two iteration. Now let's observe जो हमने अभी अभी पैटर्न ऑब्जर्व करा। अब देखते हैं कि थर्ड पास में क्या ये चीज एक्चुअल में वर्कआउट कर रही है या फिर ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था। बिना वेरीफाई करे कैसे मान लें? So let's try to do that. Okay. So let's try to find out the answer. Out of these three elements, 2, 13, minus 1, which is the largest one? 2, 13, minus 1. 13 is the largest. So let's try to do the third pass और फिर देखते हैं कि क्या इस जगह पे 13 आता है कि नहीं आता। अगर आ गया सो बिंगो, हमने ऑब्जर्व सही करा है। अगर नहीं आया सो देयर इज सम गड़बड़। So let's start J with the loop, J loop with the 0. So J again at the 0, and इस टाइम देखते हैं कि कब तक चलेगा। So max की वैल्यू 5 है और I की वैल्यू इस टाइम पे 2 हो जाएगी। So 5 minus 2 minus 1. So 5 minus 2 is 3, 3 minus 1 is 2। तो J कब तक चलेगा? लेस देन 2 तक। तो यानी कि 0 और 1 दो बार आइटरेट होगा, 0 पे और 1 पे। That's it. Cool. So let's verify. A of j is this one. A of j is 2. A of j plus 1 is 13. तो कंपेयर करो, क्या 2 बड़ा है 13 से? नो। सो विच मीन्स कि 2 अपनी सही जगह पर है, कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज दी j, j को बना दो 1 बिकॉज j प्लस प्लस कर रहे हैं, j विल बिकम 1। नाउ कंपेयर j ऑफ 1 विच इज 13 और माइनस 1, इन दोनों को कंपेयर करो 13 और माइनस 1 को। क्या 13 बड़ा है माइनस 1 से? यस। तो 13 बड़ा है माइनस 1 से, वी विल डू अ स्वैप। सो लेट्स डू स्वैप। इसको बना दिया माइनस 1 और इसको बना दिया 13 को। j की वैल्यू होगी 2। दैट्स इट। j और आइटरेट नहीं होगा बिकॉज हमने पहले ही सेट कर लिया था कि j तब तक करेगा जब तक लेस देन 2 है। Cool. So after third swap, this is minus 1 and this is 13. So let me rewrite. This is minus 1 and this is 13. Okay. तो क्या जो हमने अज्यूम करा था वैसा ये काम कर रहा है? Yeah. Now just have to swap the 0 and 1 j array. Yeah, exactly. बट मेरा मेन फोकस क्या था? स्वैपिंग तो देखो हर एक जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो सब आपको सॉर्ट करके ही देने वाला है। बट द मेन कंसर्न ऑफ माइन इज कि आपको पता हो कि बबल सॉर्ट काम कैसे कर रहा है। ओके, व्हाट्स द बिहाइंड द सीन? ओके, सो या, सो सी 13 is added correct location. Yeah, cool. सो कभी कभी दिस कैन बी आस्क्ड यू किसी भी कोडिंग के कंपटीशन में या फिर इंटरव्यू के अंदर भी, कि भाई बताओ ये सेट ऑफ एरे मैंने आपको दे दिया, बबल सॉर्ट के थर्ड पास के बाद इस एरे की क्या वैल्यू होगी? तो आपके पास दो तरीके हैं। आप एल्गोरिथम लिखो, एक एक को बैठ के आइट्रेट करो और अपना आंसर सबमिट करो। दूसरा तरीका हो सकता है यू कैन प्ले स्मार्टली, यू नो आफ्टर ईच बबल सॉर्ट पास जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक?
कौन सा तरीका ज़्यादा जल्दी आपको सही आंसर तक लेके जाएगा? द फर्स्ट वन जहाँ पे आप आइट्रेट कर रहे हो, या फिर सेकंड वन जहाँ पे आप स्मार्ट प्ले कर रहे हो? सेकंड वन ऑफ कोर्स, या सेकंड वन। Cool. Now everyone is like second one wala ज़्यादा सही है. And yes, definitely when you are sitting in a competitive room, तो वहाँ पे competition ज़्यादा है and everyone is like जल्दी करो. So yeah, and definitely you all are right. हमें last वाला भी complete करना है. So let's increase the value of I and let's reset the J. Okay. So I plus plus होगा, I will become 3. All right, J start होगा 0 से. So now let's compare A of J which is 0, 2 और -1 को compare करो. क्या 2 बड़ा है -1 से? Yes. So we need to swap -1 और ये 2. Yeah, cool. और ये कब तक चला था? Let's do that also. 5 minus I की value 3 है, -1. So 5 minus 3 is 2, 2 minus 1 is 1. तो लेस देन 1 तक चलना था, विच इज जस्ट ओनली 0. उसके आगे J को नहीं चलना है. एंड आई विल बिकम 4. सो अब 4 पे जाकर इफ यू ट्राई टू रन दिस लूप, ये चलेगा ही नहीं. सो या, दैट्स इट. लेट मी रीराइट द एलिमेंट्स. दिस इज नाउ -1, द फर्स्ट वाला, and this is 2. Cool. So yeah, if you notice, this is the output. This is the final result of my bubble sort. Can you say is it in ascending order or not? Yeah. Yes, yes, it is in ascending order. Cool, and that's your bubble sorted. Exactly, it's now sorted. So that's your bubble sort. हमेशा याद रखना how bubble sort works. It will find the maximum element from your data set and put it at the end. फिर एंड में डालने के बाद उसको इग्नोर कर दो. रिमेनिंग वाले में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करो और एंड में रख दो. फिर बाकी रिमेनिंग में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करो, एंड में रख दो. ओके, एंड डू टिल जब तक आपके पास डेटा सेट खत्म नहीं हो जाता. ओके, दैट्स हाउ ए बबल सॉर्ट वर्क्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्सिटीज, तो भाई ये टाइम लेगा एन स्क्वायर का. ओके, सो मोस्ट ऑफ द सिंपल sorting algorithms take the time of n square. Most of the algorithms took take the time n square. कुछ कुछ हैं जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी टाइम में आपको आंसर कर देती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे. Those are a bit bigger one. उनको समझने के लिए you should know the tree, थोड़ा सा और डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आप उस पर काम कर सको easily. Okay, so I guess that's your first stream in the series of um, sorting algorithms.